you have grasped the concept of inside out and क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर खुदा न खास्ता ये कॉन्सेप्ट इनसाइड आउट का जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है, अगर उसको आप कवर नहीं करते, उसको अपने अंदर लेके नहीं जाते, तो फिर इन हैबिट्स को ग्रैस्प करना मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज उनको बार बार देखें, बार बार पढ़ें। राइट, अब हम अभी शुरू करते हैं। 7 हैबिट्स हम आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, और उससे पहले 2-3 स्लाइड्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अच्छा, क्लिक कर दूं? राइट, तो ये स्लाइड है अरिस्टोटल का, ये वो है उसका थॉट। द हार्डेस्ट विक्ट्री इज द विक्ट्री ओवर सेल्फ। यकीन करें कि ये क्रक्स है। सबसे मुश्किल काम जो है ना, वो ये है कि हम अपने इनर को कैसे काबू करेंगे, उसको कैसे फतह करेंगे, उसको कैसे टेम करेंगे। तो ये ज़हन में रखें कि अपने इनर सेल्फ को जो है ना, वो कंट्रोल करना है। इनसाइड आउट मीन्स कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर इनर सेल्फ और फिर आउटर सेल्फ की तरफ आना है। राइट, मेन आइडियाज ऑफ प्राइवेट विक्ट्री। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? प्राइवेट विक्ट्री ऑब्जेक्टिव इज ये develop a trustworthy character, develop a trustworthy character based on principles. This is very, very important कि trustworthy character जो है, that can only be developed if we also develop the foundation of principles. So focus on self mastery. Focus on self mastery and internal control. Please write down in your notebook. Focus on self mastery and internal control. Right. ये देखें, पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर, ये दो हकीकतें हैं, ट्रुथ्स हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग, हम इन्हीं के गिर्द हम घूमते रहते हैं। और यहां जरा देखें, इनसाइड आउट, इनसाइड आवर ओन कैरेक्टर। तो जिंदगी में पर्सनैलिटी आप देखें हार्डली, और ये आइसबर्ग है, और कैरेक्टर का हिस्सा कितना है। सो इस स्लाइड से हमें यह सबक मिलता है कि नो डाउट पर्सनैलिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट, but role of personality in our life at the end is not that crucial as the role of character. अफसोस यही है कि we have forgotten. We just focus on the personality, and slowly, month by month, year wise, we have forgotten the importance of character. Right. ये स्लाइड हमने लास्ट टाइम भी
शायद शेयर की हो। ये आप जरा देखें, इसमें कॉन्सेप्ट दिया है Stephen Covey has given 3 levels: dependence, interdependence, and uh, dependence, independence, and interdependence. तो वो एक्सप्लेन करता है आपने उस किताब में कि पहला जो हमारी स्टेज है वो डिपेंडेंस की होती है। जैसे एक चाइल्ड है, जैसे कि हम दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो यहां से जब हमारा जर्नी शुरू होना है, फर्स्ट 3 हैबिट्स इफ वी लर्न इफेक्टिवली, we will reach the next level of independence. So this is very, very important that we must learn, we must understand the first 3 habits. And he has also given the name private victory. So independence, when we achieve independence, we also achieve private victory. So this is the first half. And next level is interdependence. Interdependence means जहां हमारे साथ दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, और उसके लिए उसको नाम उसने रखा है पब्लिक विक्ट्री। और उसकी भी ये 3 हैबिट्स हैं जो कि इफ वी लर्न then we will touch the third level, which is the highest level of maturity, interdependence. And then the 7th habit is sharpen the saw. Right. Now we begin our discussion with respect to 7 habits of highly effective. The title of the book is 7 habits of highly effective people. तो ये जो 7 हैबिट्स हम पढ़ेंगे, समझेंगे, स्टीफन कवे is with commitment. He is saying that if we learn these 7 habits, we will achieve higher level of effectiveness. So the first habit is be proactive. Be proactive. और इसका जो दूसरा नाम है, the habit of choice. Be proactive means habit of choice. And what does it mean? Be proactive. People are responsible for their own choices and have the freedom to choose based on principles and values rather than. तो जरा गौर इसको करें, इधर है स्टिमुलस। स्टिमुलस
मीन्स सर्कमस्टांसेस जिनको हमने फेस करना है, वो एक स्टिमुलस है ना, उसके अगेंस्ट वी हैव टू एक्ट एंड रिएक्ट। सर्कमस्टांसेस हैं, डिफिकल्टीज हैं जिंदगी की, कंफ्लिक्ट्स हैं, फियर्स हैं, we have to tackle them, we have to face them. So these are the stimuluses. और दूसरी साइड पे रिस्पॉन्स करना है हमें। एज ए ह्यूमन बीइंग्स वी आर टू रिस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुलस, एंड रिस्पॉन्स में आ रहा है एक्शन, हमारे हमारे एटीट्यूड, और ये जो रिस्पॉन्स है ये इसके लिए हमारी चॉइस क्या होगी? फ्री टू डिसाइड, we are free to choose, we are free to choose, and we are responsible for our choices. Dependence to independence, the first level, dependence to independence. यहां पे आप देखें स्टिमुलस की बात हुई और इधर रिस्पॉन्स and freedom to choose. We have to keep in mind कि अल्लाह ताला ने हमें ये पावर अता की है कि वी आर फ्री टू चूज, लेकिन अफसोस कि हम अपने नेगेटिव पैराडाइम्स में फंस के रह जाते हैं। तो यहां फिर स्टीवन कभी हमें बताता है कि चूज कैसे करना है, हाउ टू चूज आवर ऑप्शन। फ्रीडम टू चूज मेरे पास है और मैंने अब वो रिस्पॉन्स करने की जो ऑप्शन है उसको चूज कैसे करना है। कोई भी स्टिमुलस आया और नाउ आई हैव टू रिस्पॉन्स, एंड दिस ऑप्शन, हाउ टू एक्सप्लॉइट दिस ऑप्शन, इसको जरा हम देखते हैं। दीज आर 4 एंडोमेंट्स। सेल्फ अवेयरनेस, एज ए ह्यूमन बीइंग हम अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, अल्लाह ताला ने हमें कॉन्शियस दिया है, जो कि जानवर के पास नहीं, किसी के पास नहीं। तो शऊर को अगर हम यूज करेंगे तो उसके थ्रू ये 4 एंडोमेंट्स जो हैं वो हमें मिलती हैं। द फर्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओनिंग एंड कंट्रोलिंग फीलिंग्स, behaviors, thoughts and language. Owning, ओन करना है जो सिचुएशन है, और कंट्रोल करना है, फील करना है, और फिर मेरे बिहेवियर वहां से थॉट्स हैं। तो यहां से सेल्फ अवेयरनेस, मुझे अल्लाह ताला ने मुझे जो शऊर दिया है उसकी रोशनी में मैंने एनालाइज करना है वो जो स्टिमुलस आया है जिसके अगेंस्ट मैंने रिस्पॉन्ड करना है। तो सेल्फ अवेयरनेस की मदद से आई हैव टू एनालाइज इंडिपेंडेंट। फिर इमेजिनेशन, creating new solutions, thinking creatively, challenging preoccupied notions, breaking the mold. So what we have thought based on the endowment self-awareness, then we have to imagine. Imagine means that we have to take it into our subconscious.
ये कॉन्शियस में हमने उसको उसकी शक्ल बनाई, स्ट्रक्चर किया, एंड नाउ वी हैव टू टेक इट टू आवर सबकॉन्शियस माइंड, सो दैट ये आहिस्ता आहिस्ता वी हैव टू डेवलप इट इनटू हैबिट। हैबिट बनाने के लिए इमेजिनेशन का रोल जो है वो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बगैर हैबिट नहीं बन सकती। फिर थर्ड, जो कॉन्शियस, जमीर, हमारा जमीर, हमने वो चॉइस, सेल्फ अवेयरनेस जो है उसने हमें एक मॉडल दिया, सिचुएशन समझी, इमेजिन किया उसको कि उसकी उसकी क्या एक्सट्रीम्स क्या हैं, हाउ फार इट इज पॉजिटिव, हाउ फार इट इज नेगेटिव, कितना मुश्किल है, कितना आसान है, सब कुछ उसका एनालिसिस किया। जी, इमेजिनेशन, और उसके बाद कॉन्शियस जो है हमारा हमारा जमीर जो है उसकी बेस पे चूजिंग टू डू द राइट थिंग regardless of the external pressures, matters of morality। मोरलिटी को हाथ से नहीं छोड़ना, जमीर की आवाज को सुनना है। और फिर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर विल पावर भी रखी, पर्सनल विल जिसे कहते हैं, टेकिंग एक्शन और इनिशिएटिव, एक्टिंग रादर देन बीइंग एक्टेड। सो प्लीज इसको जरा मैं दोहराता हूं। सेल्फ अवेयरनेस, द फर्स्ट एंडोमेंट, टोटल जो व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सब कुछ जो है वो सेल्फ अवेयरनेस मेरे अंदर, उसकी वो क्या कहना चाहिए। उसके बाद उसको मैंने इमेजिन करना है, सबकॉन्शियस की तरफ जाना है, और फिर मैंने अपना रिस्पॉन्स जो है वो अपने जमीर की बेस पे करना है। व्हाट डज इट मीन? आई हैव टू बी 100% ऑनेस्ट। जमीर तो हमें गलत रास्ते पे नहीं ना लेके जाएगा, वो हमें ये नहीं कहेगा कि झूठ बोलना है, वो ये नहीं कहेगा कि बस उनके चक्कर चला दे। सो द थर्ड एंडोमेंट इज आवर शऊर, और वो शऊर की रोशनी में हमने अपना रिस्पॉन्स जो है वो डिसाइड कर, अपने शऊर की रोशनी में अपना रिस्पॉन्स मैंने डिसाइड कर। और फिर ये जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर विल पावर रखी है, तो फिर विल पावर की के जोर से उसको इम्प्लीमेंट करना है। नो डाउट पॉजिटिविटी को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, उसमें शैतान हमारे साथ है, नेगेटिव फोर्सेस हमारे साथ हैं, लेकिन शऊर की मदद से हमने क्या किया, वो पॉजिटिव मोस्ट इफेक्टिव रिस्पॉन्स सेलेक्ट हुआ, और फिर साथ ही विल पावर के थ्रू हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, रिस्पॉन्ड कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है हैबिट वन का, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
यही सब कुछ है, कूजे में दरिया बंद हुआ है। आप इसको जरा गौर से देखेंगे। और जब हम आग ये तीन हैबिट्स कवर करेंगे तो वो हमारा जर्नी जो है वो डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस की तरफ होगा। नेक्स्ट। ये ये थोड़ा सा ना यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, राइट। अब देखिए, पहली स्लाइड में हमने अपना एक्शन प्लान जो है वो डेवलप कर लिया। ठीक। अब ये है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो हैबिट 1 is based on this following principle. I am free to choose and I am responsible for my choices. गौर करें, फर्स्ट पार्ट आई एम फ्री टू चूज, अल्लाह ताला ने हमें जो शऊर दिया है उसके साथ कोई शक्ल नहीं है। वी आर 100% फ्री टू चूज आवर रिस्पॉन्स। ऐसे ही होता है, आपको पता है। लेकिन साथ ही ये गौर करने वाली बात है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई चॉइसेस। मैं ये नहीं कह सकता कि ये हुआ तो वो हुआ। मैं शऊर की मदद से ये फैसला किया और शऊर की मदद से ही इसको मैंने अप्लाई किया। नाउ आई कैन नॉट ब्रिंग द एक्सक्यूज दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई चॉइस। और बस जैसे हो गया और वो हो गया वो हो गया। नो, आई हैव टू बी ब्रेव enough to take the full responsibility of my action. तो इसमें पैराडाइम देखें क्या है। इनफेक्टिव पैराडाइम आमतौर पर जिंदगी में हम लेके चल रहे हैं। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस। आई एम प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस। तो हम बार बार ये पढ़ा है, नहीं ऐसी बात नहीं है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कमस्टांसेस एंड आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई चॉइसेस। जो the results which I am facing, I am responsible for those results. This I have to believe it. I have to believe it is very, very important. बिहेवियर हमारा क्या होना चाहिए? हैबिट 1 के नीचे प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉज, सबसे पहले पॉज। ये पास जो है यही सारा, दिस इज द सीक्रेट ऑफ हैबिट 1। इफ वी सक्सीड टू हैव ए पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर रिस्पॉन्स becomes almost 90%। 90%। होता क्या है, स्टिमुलस आया, एकदम नेगेटिविटी आई, आई गॉट रिएक्टिव और मैंने impulsive response दे दी। That's why Stephen Covey has asked us, the first step is the pause. My first response is the pause। एक्शन नहीं है, pause and respond based on principles।
वो जो भी सिचुएशन है उसमें जो जिंदगी के प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूं, उसमें से फिर मैंने देखना है मेरा रिस्पॉन्स जो है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। यूज प्रोएक्टिव लैंग्वेज। लैंग्वेज भी जो हमारी उस वक्त नेगेटिव हो जाती है, वो भी ध्यान करना है कि वो भी मेरे कंट्रोल में है। हमें लगता ये है कि यार बस मेरे मुंह से निकल गया। इफ आई एम इंटरनली स्ट्रांग इनफ, आई मस्ट बी एबल टू कंट्रोल माई लैंग्वेज। एक्सपैंड योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो वो आप try to develop inner strength. Whatever the circumstances are, we must respond positive. तो उसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है, सी वो सिचुएशन मेरे सामने आई और मैंने चूज किया अपना रिस्पॉन्स और उस रिस्पॉन्स को मैंने एक्ट किया, एक्शन के थ्रू उसको इस्तेमाल किया और नेचुरली जिस तरह का मेरा रिस्पॉन्स होगा उसी तरह के मेरे रिजल्ट्स। तो ये हमें भी हैव टू कीप इन माइंड। तो रिजल्ट्स क्या है? इफ आई सक्सीड टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिव, प्रोएक्टिव, तो फिर मुझे रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस, मोर सेल्फ अवेयरनेस, greater initiative, becoming the creative force of our life. तो ये रिजल्ट्स आप गौर करें कि मैं इतनी आसानी से हम ये रिजल्ट्स जो हैं उनको जाया कर देते हैं बाय रिस्पॉन्डिंग डायरेक्ट करके। एंड इफ वी रिस्पॉन्ड प्रोएक्टिवली, एंड देन we will build our personality up in this way. So we move forward. So ये इसको याद रखें, प्रिंसिपल को लिख लें कहीं पे। I am free to choose and I am responsible for my choices. और उसके ये दो जो उसके वो हैं पैराडाइम जो हैं, इनफेक्टिव पैराडाइम, उसको खत्म करना है। आई एम प्रोडक्ट ऑफ माई चॉइसेस। उसने ऐसे बात कर दी थी, उसने फला ये कर दिया था, मुझे इसलिए गुस्सा आ गया। नहीं, आई एम प्रोडक्ट ऑफ माई चॉइसेस। अल्लाह ताला ने मुझे श्योर दिया है, वो 4 एंडोमेंट्स दिए हैं। अगर मैं उनको इस्तेमाल नहीं करता तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। राइट, नेक्स्ट। आगे हो नहीं कुछ sorry for this little disturbance. Past and respond based on principle, ये है मेरा चैलेंज। सबसे पहला चैलेंज क्या है? पॉज। अगर मैंने पास कर लिया तो बस मैं जीत गया, फिर सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। वो ईगो जो है अंदर की, वो जो शैतान है, ईगो है, वो पास नहीं करने देती, वो इमोशनल कर देती है।
and we respond emotionally. उसका solution सिर्फ एक है कि we must take a pause and respond based on, वो अगला हिस्सा इतना मुश्किल नहीं है. रिएक्टिव बिहेवियर जो यूजुअली हमारे साथ होता है. रिएक्टिव पीपल अलाउ आउटसाइड influences to control their responses. Respond based on moods, feelings, and circumstances. यही होता है ना हमारे साथ. गौर करने वाली बात. Reactive people allow outside influences to control their responses. So, we have to learn proactive behavior. And what is that? Proactive people pause. देखें pause. ये मोटा सा लिखें हर जगह अपने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए. Proactive people pause to allow themselves the freedom to choose. ये freedom to choose positive response, freedom to choose positive response के लिए must है कि I have the control on my sentiments and I have a pause before I say something. Freedom to choose their response based on principles. Based on principles हमारा response हो ही नहीं सकता अगर मैंने pause नहीं किया. वो मेरा reactive response हो और वो गलत हो. Their freedom to choose expands as they wisely use the space between stimulus and response. Their freedom, हमारी हर ह्यूमन बीइंग की जो फ्रीडम है वो हम ज़ाया कर देते हैं. देखें कैसे दुख की बात है. अलमिया ट्रेजेडी. Allah has given us the freedom to choose our responses, जिसको हम misuse करते हैं. Their freedom to choose expands as they wisely choose the space between stimulus and wisely choose. वही ऊपर जो हमने बात की है कि we have to respond based pause, freedom to choose their based on principles and desired results. Pause and respond based on principles. People ये इधर उधर हो सकती है. People are always blaming their circumstances. It's a pity. People are always blaming their circumstances for what they are. I don't believe in circumstances. बर्नार्ड शाह बहुत बड़ा स्कॉलर, ये उसकी कोटेशन लिख लें. पीपल आर ऑलवेज ब्लेमिंग देयर सर्कमस्टांसेस. हम भी उनमें शामिल हैं. फॉर व्हाट दे आर. आई डोंट बिलीव इन सर्कमस्टांसेस. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अल्लाह हैज गिवन मी द शऊर. Allah has given me the power of shaur through which we can decide
my proactive response, not reactive response. Right. Now we take the next slide. फर्दर स्ट्रक्चर इसका बताया है कैसे करना है। ये हैबिट 1 is the crux of the whole 7 habits. So मेरी रिक्वेस्ट होगी प्लीज इसको आप प्लीज give your full attention and learn it so that your subconscious mind is trained accordingly. जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड नहीं होगा आपसे बात नहीं बने, किसी से भी नहीं बने। वो फिर ईगो जो है ना वो हमें चक्कर देता है। यूजिंग स्पेस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो अब ये ह्यूमन एंडोमेंट्स के साथ कुछ क्वेश्चंस, सेल्फ अवेयरनेस, imagination, conscience, independent will. In other words, these 4 endowments are the 4 parts of our show, conscious. Up. Now he has further explained. Think of situation where you consistently respond in a reactive way. That is losing your patience, avoiding confrontation, lacking self-discipline. वो कहता है कि इन पे फोकस करें। तो नेक्स्ट, व्हाट इज अ बेटर मोर इफेक्टिव वे टू रिस्पॉन्ड। फिर आपने आपको ये सवाल करें, what would be the positive consequences of responding in this new way? उसको विजुअलाइज करें। Who would be affected? What would be the impact? We analyze. In the beginning, we have to follow this procedure. We have to do as a student. But then if I continue doing and following this process, this principle, then it will become my habit. In other words, my subconscious will absorb it and it will become my habit. What would be the positive consequences of our responding in this new way? Who would be affected? What would be the impact? What is your commitment? What? यार वो फिर वो नीचे आ गया ना, इसको कुछ कर नहीं सकते। What is your commitment level to respond in this new way the next time you are in this situation?
ये है फिर चैलेंज। सर्कल द नंबर दैट corresponds to your commitment level, 1 to 10. Next time, now you have to promise with your mind, your heart, कि ये देखिए 1 is the highest possibility and 10 is the lowest possibility. So for the next time, you have to decide with your heart and mind, keeping in view these questions, keeping in view this procedure, SOP. Take it as a SOP, standard operating procedure. Please have a copy of it and place somewhere in front of you so that you could see it again and again. And my request will be, as Stephen is saying, in the beginning, we will have to do it as a beginner, as a student. Use of proactive language. अब ये देखें, हमें फर्दर वो रास्ते बता रहा है कि कैसे हमने रिएक्टिव एस्पेक्ट को कंट्रोल करना है और उसके बाद प्रोएक्टिव लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है. We can tell the difference between proactive and reactive people by listening to the language they use. So, what is the पहले मैं reactive language को read करता हूँ. There is nothing I can do. Total negative. That is just the way I am. Oh, इससे ज़्यादा negative क्या हो सकता है? He makes me so mad. जी अक्सर ओ भाई उसने कोई मुझे जख्मी नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने वो अपने गुस्से में कोई बात ऐसी की है गुस्से वाली, वो कैसे मैं पागल हो गया. He makes me so mad. जरा जेल में रखें. If I use this sentence, he makes me so mad, it means कि अल्लाह ताला ने वो जो शौर मुझे दिया है उसका इस्तेमाल मुझे नहीं आता, वो मेरे पास में नहीं है. ईगो मेरी जो है वो ज्यादा पावरफुल हो रही है. ईगो हैज डिफीटेड माय शौर, कॉन्शियसनेस जो है. They won't allow that. I have to do that. I can't. I'm like that. So this reactive language is to be replaced by proactive language. Let's look at our alternatives. सबसे पहले I will have a pause. मैंने सबसे पहले ये है कि मुझे अपना इमोशनल बटन जो है वो ऑन करने से रोकना है. Let us look at our alternatives. I can choose a different approach. I control my own feelings. As a human being, Allah Ta'ala has blessed me with the show, so I can control my feelings. I can create an effective presentation. I will choose an appropriate response. I choose. I choose. ये भी लिखें कहीं पे. I choose. I choose. I prefer. I will. अब सिनेरियो, ये एक सिनेरियो दिया हुआ है. How will you proactively respond to this situation? At work, you developed a new way to organize the
filing system that makes it easier for the office staff to find documents. Your supervisor takes all the credit. एक सिचुएशन है, उसने ज्यादती की है, वो क्रेडिट टीम को भी मिलना चाहिए था, लेकिन वो सारा क्रेडिट उसने खुद ले लिया। तो ये एक सिनेरियो है, और इसमें वो एक्सरसाइज के तौर पे वो हाउ विल यू प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन की कोट आपके सामने आ रही है, there are only two ways to live your life. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. Other is as though everything is a miracle. ये देखें, कमाल की बात करती है कि मिरेकल्स हो सकते हैं, आप बदल सकते हैं अपने आप को। Now we have completed habit 1, and now we come to habit 2. Now, habit 2. Habit 1, be proactive, that we have learned. And now, the next habit, begin with the end in mind. Begin with the end in mind. Beautiful title. To begin, the habit of vision. इसका नाम है habit of vision. To begin with the end in mind means to start with a clear understanding of your destination, whatsoever is. जर्नी भी हो एक एग्जाम्पल है, और आपका कोई प्रोजेक्ट भी एक एग्जाम्पल है, और आपने जो रिस्पॉन्ड करना है वो भी एक एग्जाम्पल। To begin with the end in mind means to start with a clear understanding of your destination. कि ये respond, what I have thought to respond, इसका अंजाम क्या होगा? Destination, it means to know where you are going so that you better understand where you are now, and so that the steps you take are always in the right direction. I read it again. To begin with the end in mind means to start with a clear understanding of your destination. जो मैं करने लगा, whatever the response I am choosing, what will be the consequences? इसके consequences क्या हो? ये कहता है कि वो उसको ज़हन में लाए।
It means to know where you are going so that you better understand where you are now, and so that the steps you take are always in the right direction. और फिर ये यहाँ पे कुछ उसने एक जगह से लिया है. Would you tell me please which way I ought to go from here? ये सवाल करता है, एक मुसाफिर है. Would you tell me please which way I ought to go from here? That depends a good deal on where you want to go to get to set the cat. ये एक स्टोरी है ना कैट की. That depends a good deal on where you want to get to set the cat. उसने कहा कि जो ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है, फोकस क्या है. तो जवाब आता है, आई डोंट मच केयर वेयर, said Alice. And it doesn't matter which way you go, said the cat. तो ये है अलमिया. दिस इज द ट्रेजेडी विद अस. ये हमें ध्यान में रखना है कि whatever I would like to respond, first of all, I have to see कि इसका consequences क्या. This is very, very important. Right. आगे चलते हैं. Principle. अब हैबिट 2 का प्रिंसिपल आ गया. हैबिट 1 का प्रिंसिपल आपने लिख लिया. Now please write principle of habit 2. कुछ बेहतर हुआ है ना? हाँ. Mental creation precedes physical creation. जैसे उसने कहा कि पहले आप वो मेंटल क्रिएशन है, तो वही फिर वो आप फिजिकली उसको करते हैं. सो मेंटल क्रिएशन precedes physical creation. And in ineffective paradigm क्या है? I live by default. डिफॉल्ट का मतलब ये है जो मेरे ज़हन में आ गया, जो मेरी ईगो ने, जो मेरे दिमाग ने कह दिया, बस मैंने उस तरह से एक्ट कर दिया. दैट इज आई लिव बाय डिफॉल्ट. और इफेक्टिव पैराडाइम क्या है? आई लिव बाय डिजाइन. कि मैं सोच समझ के आई सिलेक्ट माय रिस्पॉन्स. I do not respond emotionally, reactively. I take a pause and I think with the help of my consciousness, and then I respond. Behavior and vision outcomes before you act. And vision, you आप सोचें, अब विजुअलाइज करें कि ये जो मैं रिस्पॉन्ड करने लगा हूं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. एंड विजन आउटकम्स बिफोर यू एक्ट. Create and live by a personal mission statement. So Stephen Covey has advised
that every one of us must develop his or her own personal mission statement. What kind of life I will live, and respecting these principles which we have studied. Result क्या होगा? A clear definition of desired results. पहले सोचेंगे, पहले करेंगे, possible results जो है. A greater sense of meaning and purpose. Criteria for deciding what is or is not important. Improved outcomes. तो ये हैबिट 2 हमने मुकम्मल की है, और नाउ वी मूव हैबिट 3. सर हैबिट तो बढ़ानी है, खत्म हो गई। हाँ, mental creation precedes physical creation. Very clear. पहले हमने अपने माइंड में डेवलप किया खाका उसका, and then we will create physically. All things are created device. First in the mental creation or plan, and second is the physical creation or work. So mind it. The most important thing is the first creation. जो प्लान मैं बनाने लगा हूं, फर्स्ट क्रिएशन जो मैं करने लगा हूं, वो आई हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव. I have to ensure that I am not doing it emotionally. गुस्से में नहीं कर रहा, इमोशंस के साथ नहीं कर रहा, बल्कि I am doing it with the proactive mind. Proactive mind. So ये जरा देखें, mental first creation and physical second creation. ये एक एग्जांपल है. एक आप समझें कि एक बिल्डिंग का वो मैप पहले बनता है, नक्शा बनता है, और फिर वो बिल्डिंग जो है बनाई जाती है. हाई इफेक्टिव पीपल clearly see the outcome they want in every area of life before they act. So, since we believe that we are competent enough to live highly effective life, so highly effective people clearly see the outcome they want in every area of life before they act. So, the first is mental creation, a clear agenda and objective. और उसका फिजिकल क्रिएशन क्या हुई? A productive meeting and architectural blueprint and office tower building बनाई, extensive market research, a successful new product. So before a successful new product, I have to do extensive market research. So mental creation and individual goal setting session. A master's degree. I mean वो an individual, मैंने अपना गोल सेट किया है कि मैं ये करूँगा फ्यूचर में.
a personal mission statement, a life of contribution and fulfillment. So we must develop our personal mission statement, which must be based on the concept a life of contribution and fulfillment. And vision outcomes before you act. ये जो पहला हमने पढ़ा, and vision outcome लिख लें ये, and vision outcomes before you act. यकीन करें कि ये लिख के लगा लें, घर में भी, घर से बाहर और ऑफिस में. ये है, this is the crux of the matter. जहां गड़बड़ होती है सब, we become emotional or we just forget it. We don't envision outcome before. What are the top 3 goals for your team or organization this year? How will you know if you reach them? Habit 2 checklist. Do you begin with the end in mind at the start of every meeting? Beautifully, Stephen has given us food for thought. Do you begin with the end in mind at the start of with the end? When you plan a new year week or day, do you begin with the end in mind when you begin a new project? Do you begin with the end in mind when you plan a vacation? Do you begin with the end in mind before you begin a crucial conversation? Very, very important. We must. Do you begin with the end in mind before you begin a crucial conversation? Applying habit 2, identify some areas of your life in which you could benefit from habit 2. Begin with the end in mind. Identify some areas of your life in which you could benefit from the habit 2. Please definitely do it in next few days. This is the golden opportunities that we are learning those habits which are, as Stephen says, 7 habits highly effective people. Huh? Right. Apply habit 2. वो habit 2 checklist apply. Identify some areas of your life in which you could benefit from habit. Create and live by a personal mission statement. ये भी वैसे अब कमाल की अपॉर्चुनिटी होगी आपको, अगर कुछ दिन गुजर गए तो वो जो एक मोमेंटम बना होता है वो खत्म हो जाएगा. मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट मिस इट. पैड़ी चंगी जैसे बनती है बनाएं, और वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश भी होती रहेगी, और फिर उसको पूरी पूरी नीयत के साथ बनाएं, पूरी कमिटमेंट के साथ बनाएं, और फिर उसको उसी कमिटमेंट के साथ उसको फॉलो करें. A personal mission statement is like a constitution by which you make all decisions for your life. Highly effective people shape their, highly
every one of us wants to be highly effective person. So उसकी definition देख लें. Highly effective people shape their own future instead of letting other. अगर हम फोकस्ड नहीं है, हमारे इस तरह का कोई टारगेट्स नहीं है, हमारे इस तरह का कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर कुछ पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा होता है. देयर कल्चर और देयर सर्कमस्टांस डिटरमाइन. तो फिर वो जो माहौल होता है, एनवायरमेंट होता है, वो ही हमें लेके चल रहा होता है. हम उसके गुलाम बन जाते हैं, स्लेव बन जाते हैं उसके एनवायरमेंट के. वी बिकम स्लेव ऑफ द एनवायरमेंट if we fail to do such things. If you were to ask me what is the one thing that would have the greatest impact for good, I would answer work to develop a personal mission statement. It will be the single most important and far-reaching leadership activity you can do. Oh, ये किसी जगह इसका इंटरव्यू हुआ था और उसमें Stephen Covey has given this thought. Another of international bestseller. Create and live by a personal mission statement. Create and live by the personal mission statement. Personal mission statement you propose and meaning in life. Personal mission statement, your purpose and meaning in your purpose and meaning in life. Benefits of a personal mission statement. Clarify what is important for you. Provides focus. Helps you design your life instead of having it designed by you. Guide your day-to-day decisions. Gives you a greater sense of meaning and purpose. Make you the leader in your own life. Yeah. And second last, gives you a greater sense of meaning. Yeah, कमाल जिंदगी का. हम जब इस दुनिया से जाएं तो we must have reasonable feeling that I have gives you a greater sense of meaning. Write tribute statements for key roles. Effective people take time to define the legacy they want to leave in each of their key roles. Their roles represent important relationships and key responsibilities. The following activities will help you define the legacy you want to leave in each of your key role. Number one, identify and write up to 7 key roles. ये एक एक्सरसाइज है जो उसने कहा कि आप मुकम्मल करें और माई हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज डोंट मिस इट, डू इट. आप देखेंगे कि किस तरह the way you become empowered, आप जरा देखें, एक मैजिक होगा आपके साथ. Identify and write a key persona's name
for each row. Visualize. ये देखो कैसी जबरदस्त है। नंबर 3 को जरा जेहन में रखें। Visualize your 80th birthday celebration. Attending the celebration are the key people from each row. In the tribute statements boxes, write a brief statement articulating how you would want the key person in each role to describe you. That is, how would someone describe you influence on his or her life, your legacy? Identify long-term goals. What 2 or 3 key things could you do to help make these tribute statements a reality? So this is the end of habit 2. Hmm? कितने मिनट्स की? 10 से 3 बजे तक 15 मिनट। So now we will have a break for 15 minutes and the time is अभी क्या टाइम हुआ है? 3:30 35 45 3:40. yes sir 3:45 So 15 मिनट की break. yes So we will be back at 4 o'clock. जी 3 o'clock. अच्छा sorry 3 o'clock. So okay, thank you. We will meet soon.
So we are back. आप भी थोड़े से फ्रेश हो गए होंगे. So now we begin with chapter 3. Put first things first. So the first habit, be proactive. Habit 2, begin with the end in mind. And the third habit is put first things first. Or when these three habits we learn effectively, then as a result, as a bonus, we get private victory. That's the great thing. So, ये quotation है. Things which matter most must never be at the mercy of things which matter least. ये this is the secret. Practically होता क्या है कि हम कुछ ऐसे कामों में उलझते हैं जो एट द एंड हमें पता लगता है कि वो मैटर उतना मैटर नहीं करते थे और वक्त आया हो जाता. अब इस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देखते हैं कि पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मीन्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको पहले टैकल करो और पहले टैकल करो और राइट हम आगे habit 3, put first things first. In the beginning, we have seen this picture diagram. So, this private victory की 3 legs हैं. आप इस तरह इसको देखें कि private victory is standing on these 3 habits. Habit 1, be proactive. Habit 2, begin with the end in mind. And habit 3, put first things. Put first thing first. So, right. So, again, paradigm हमारा क्या है जिसके साथ हम आ रहे हैं, जो पहले से है, जिसको चेंज करना है, और फिर नया पैराडाइम क्या होगा, नया बिहेवियर क्या होगा और नए रिजल्ट्स क्या होंगे. तो ये हमारा नया पैराडाइम है, नया प्रिंसिपल है जिसको हमने लेके चलना है. Effectiveness requires the integrity to act on your priorities. Effectiveness requires. तो पहला ऐसा ये है कि if I want to be effective in my life, in my matters, तो मुझे क्या करना है? Requires the integrity किस काम के लिए? To act on my
प्रायोरिटीज। और इंटेग्रिटी मीन्स कि हर सूरत मतलब कोई कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि मैं इस प्रिंसिपल पे अमल ना करूं, इंटेग्रिटी के साथ करूं। जैसे सच नहीं बोलना होता, तो वो इंटेग्रिटी बड़ी हाई है उसकी। So effectiveness requires the integrity to act your priorities. In effective paradigm जो पहले का, I put urgent things first. असल में ऐसे प्रिंसिपल इस तरह नहीं होता। होता क्या है कि वो जो अर्जेंट मैटर्स होते हैं वो हमारे आगे पीछे फिर रहे होते हैं, वो हमें रास्ता ही नहीं देते कि हम इंपॉर्टेंट चीजों तक पहुंच सके, तो बस उसमें फंस के रह जाते हैं। तो so we have to have effective paradigm, and that is I put important things first. अब ये तरीकेकार बताएगा। This is a time matrix. This is very famous. Not important, important. Urgent, not urgent. So these are four possibilities. So if the matter is important and urgent, it is necessary. If it is important, not urgent, it is effectiveness। मतलब यहाँ हमने देखना है। फिर है नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, डिसेप्शन है। फिर नॉट इम्पोर्टेंट, वेस्ट एंड एक्सेस है। तो ये जो अब फोर पॉसिबिलिटीज हैं, अब आगे देखते हैं कि किस तरह से हमने लेके चलना है। लिव नॉर्थ ऑफ द लाइन, नॉर्थ ऑफ द लाइन, live north of the line. So he has given examples कि important और urgent matters किस तरह के होते हैं। Crisis, pressing problems, deadline driven projects meeting reports। फिर important, not urgent, preparation, prevention, planning, relationship building, recreation, values clarification। फिर है not important and urgent, needless interruptions, unnecessary reports, unimportant meeting, phone वगैरह वगैरह, other people's minor issues। फिर है not important, not urgent, trivia, busy work, irrelevant phone call वगैरह, time wasters, escape activities, excessive TV, internal relaxation। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो जो बर्निंग होगा वो इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, और फिर नंबर 2 पे इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, और ये जो नीचे वाले हैं ये तो मिलजुल के कर सकते हैं। टिप्स फॉर वीकली प्लानिंग, एग्जाम्पल दिए हुए। व्हेन बिफोर द वीक बिगिंस, वेयर some place quiet, how long, 20 to 30 minutes। ये प्लानिंग मतलब उन्होंने ये क्वेश्चन सामने रखे हैं वीकली प्लानिंग करने के लिए।
Plan weekly, review mission and roles, choose big rocks, schedule the week. वही मतलब प्लानिंग में आ जाता है. बिग रॉक्स मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब्स. ट्रेडिशनल स्केड्यूलिंग, तो ये ऊपर जो है ये छोटे छोटे काम है, और ये जो है ना ये ज्यादा टाइम लेने वाले जॉब्स हैं, लेकिन है इम्पोर्टेंट. अब उनके लिए गुंजाइश नहीं बच रही. उनको अर्जेंट काम बट नॉट सो इम्पोर्टेंट, वो हमारा पल्लू पकड़ लेते हैं और वो काम करवा लेते हैं. लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट काम है, ये बस ऐसे जरा एक साइड पे बैठे रहते हैं. लेकिन एक वक्त आता है कि ये भी अर्जेंट हो जाते हैं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको टैकल करना. तो ये फिर एक उन्होंने बिग रॉक्स के प्लानिंग, वीक पहले, मंथ पहले प्रॉपर प्लानिंग की जाए, और उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है उनको जगह जरूर दी जाए, और उसके लिए फिर कुछ इस तरह का प्लान करके कर सकते हैं. अदरवाइज इफ हम जिस तरह पहले चल रहा होता है, तो उसमें होगा क्या कि जो मोस्ट अर्जेंट काम है वो टाइम खाते जाएंगे, और हाईली इम्पोर्टेंट और लेस अर्जेंट जो जॉब्स हैं वो डिले होते हैं. खत्म हो गया जी. तो की बात. Three habits, and what does it mean? We have covered those three habits which, if which adopted properly, effectively, then, as Stephen Covey says, we will achieve private victory. Means, if these three habits are implemented effectively, ये जरा वर्ड देखें, effective, then we will have much better results, for which one can say, as Stephen says, private victory. विक्ट्री का नाम है, इतना फर्क पड़ सकता है. स्टीफन कफी such a reasonable person. So my request is, please
ये is you have to learn, learn, again learn, and make these habits part of your subconscious mind. Then you will be able to follow and apply these things. So one portion is completed. But as far as the diagram is concerned, so we have reached from dependence to independent, dependent to independent. Independent. Once we learn and apply these three habits, then we will feel independent. मजा आने लगेगा अपने काम करने के लिए. Right. अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब हमारा जर्नी शुरू होगा फ्रॉम interdependence, interdependence, and third also. And we will cover today fourth habit. And now we begin. Fourth habit is think, win, win. Win-win is a belief in the third alternative. It is not your way or my way. It's a better way. Win-win is a belief in the third alternative. नहीं वो ये ये तीसरी है.
Okay. No. So this is the fourth habit, and this is the part of public victory. Three habits belong to public victory. So this habit think win-win. फिर habit है seek first to understand, then to be understood. And sixth habit is synergy, synergize. So these three habits will constitute public victory. And the seventh habit is sharpen the saw. And so first three habits which we have covered and completed, if we live and apply religiously these three habits, please note what I am going to say. If we live and follow these three habits religiously, then we achieve the level of trustworthiness. This is a very important point. कि हमारी वे ऑफ वर्किंग में इतनी ट्रांसपेरेंसी होगी कि our colleagues will feel that we are we have achieved trustworthiness. So, and this is very, very important that once we win the trust of our colleagues, then as a whole, the output increase tremendously. The environment of the organization becomes very conducive. So this is very important point. And now we will cover next three habits. Next habit 4. Think win-win. Win-win is a belief in the third alternate. बहुत important point. It's not your way or my way. It is a better way. ये बहुत important point. Private victory now to public victory. Principle. Mind it, every habit is based on principle. Very important principle. Principle means it cannot be denied. Effective long-term relationships require mutual respect and mutual benefits. I repeat, effective long-term relationships require mutual respects and mutual benefits. उसमें फिर वो अब पैराडाइम की बात आई, जो इनफेक्टिव पैराडाइम जो अब हम लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या है? देयर इज ओनली सो मच, एंड द मोर यू गेट द लेस देयर इज फॉर मी. Scarcity mentality. It's called scarcity mentality. There is only so much, and the more you get, the less there is for me. And Stephen Covey has recommended the effective paradigm. There is plenty out there for everyone and more to spare. ये देखिए, मैजिक
180 डिग्री में सिचुएशन तब्दील हो रही है। इन इफेक्टिव पैराडाइम जो अभी हम अपनी जिंदगी में लेके चल रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके चल रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में लेके चल रहे हैं, वो है देयर इज ओनली सो मच एंड द मोर यू गेट द लेस देयर इज फॉर मी। स्केर्सिटी मेंटेलिटी कहते हैं इसको। इफेक्टिव पैराडाइम क्या है? अबंडेंस मेंटेलिटी। देयर इज प्लेंटी आउट देयर फॉर एवरीवन एंड मोर टू स्पेयर। ये है, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। तो उसमें देयर इज अ world of plenty. This is a world of plenty. This is enough for everybody. So these are the three pillars of this habit: maturity, abundance mentality, integrity. और मेरा लिए मैं इधर से शुरू करता हूँ। इंटेग्रिटी, abundance mentality, maturity. Beautiful behavior. If we follow this habit, so what kind of behaviors we have to develop in our thinking process? Balance, courage, balance, courage, and consideration. We must have balance between courage and consideration. Seek mutual benefits. Create win-win agreements. Build win-win systems. Courage, a balance between courage and consideration. Courage means courage. Consideration means to take care, to give importance. And result हमें क्या मिलेंगे? Foster solutions to problems. Foster solutions. सिक्के बंद गारंटी. More team involvement. Generosity of spirit. Rich relationships. Rich relationships. Paradigm of human interaction. Win-win. Let's find a solution that works for both of us. Beautiful. ये है क्रक्स, ये है चैलेंज. Let's find a solution that works for both of us. People who choose to win and make sure others also win. That's the point. People who choose to win and also make sure others also win. Practice win. मतलब ये बिलीफ होना चाहिए, ये बिलीफ होना चाहिए कि मैंने इस तरह मामला को लेके चलना है, चूज करना है. They search for solutions that will make them happy and simultaneously satisfy others. आपका भी फायदा हो और आपके कुलीग्स का भी फायदा हो. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये टारगेट होना चाहिए. तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है? Seek mutual benefits. Characteristics means तो ये प्रोसेस है क्या? What are the elements of the process जो कि हमें इस तरफ लेके जाएगा, विन विन की तरफ लेके जाएगा? तो उसमें पहला है सीक म्यूचुअली बेनिफिट्स.
सबसे पहले तो मैंने अपने अंदर इनर सेल्फ में ये बिलीफ लेके आना है कि आई मस्ट सीक म्यूचुअल बेनिफिट्स, मेरा भी भला हो और मेरे साथ जो और कोलीग है उसका भी भला हो। इज कोऑपरेटिव, नॉट कंपेटिटिव। लिसन मोर, stay in communication longer, and communicates with more courage। ये देखो, ये भी वो कह रहा है, communicate with courage, ये भी इंपॉर्टेंट है। So these are the characteristics। If these are followed, if these are lived by religiously, then at the end we would be achieving win-win solution। Paradigms of human interaction। So usually win lose में फंसे होते हैं, और then we justify, we don't accept कि यार कोई गड़बड़ है। I'm going to beat you no matter what। ये हो रहा है इस वक्त सब जगह, ये हो by and large। People with a win-lose paradigm are concerned with themselves first and lost। People with a win-lose paradigm are concerned with themselves first and last। They want to win and others to lose। They achieve success at the expense of exclusion of author's success। They are driven by comparison, competition, position and power। हमारी अदारों में यही हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में यही हो रहा है। वेरी ट्रू। Characteristics is very common scripting for most people, is the authoritarian approach, uses position, power, credentials, possessions or personality to get the win। ओवरशैडो करते हैं। So time is over, and next slides we will cover in next session along with other two efforts। So thank you very much. May Allah bless you। Bye bye। अच्छा, ये कैसे इंश्योर होता है